Rizwan, Asad. I have with me two personalities. One, Mr. Janab. He is the General Secretary of Karnataka Peace Organization, organization which works for the upliftment of the community, they help in education, the field of medicine. He's been social activist, he's been a politician. And on the other side, I've got a very good journalist, Mr. Zakeer Hussain, young journalist who writes the facts and always writing on the subject. He never deviates himself. Very hard to find a good and honest journalist like him. And I'm very happy to say that he was with me for many years, working with me, and I have learned a lot from him, and he has also learned a lot from him. Nevertheless, we have come here to discuss the violence which has taken place in DJLE and KJLE 6 to 7 days back. We'll get to the ground reality report on what exactly happened and what should have happened and what is the measures, the preventive measures to be taken. First of all, I have Mr. Janab भाई. जनाब भाई, आप बताइए कि जो भी उस्ताद रसूल के बारे में जिसने लिखा है और इसके बाद जो भी वायलेंस शुरू हुआ है डीजेएलडी केजेएलडी में, आप भी उस वक्त वहां थे और आप भी उसके एक विटनेस थे, ये कैसा हुआ? देखिए, सबसे पहले आज हिंदुस्तान के अंदर जब भी कोई हुकूमत का नाकामी जो होती है वो किसी एक कौम के ऊपर लाकर ढकल देती है, और सीधे से सीधा जो है उन्होंने आकर जो है मुसलमानों के ऊपर कुछ बोल दिया तो खामोश हो जाते हैं। लेकिन उनको मालूम है कि अगर मुसलमान को भड़काना है तो उन्होंने जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो है उन्होंने तोहमत लगाते हैं। तोहमत लगाने के बाद जो है एक ऑटोमेटिक जो है गलाटा होता है। उनको मालूम है कि मुसलमान इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, इस वजह से इन्होंने जो है ये काम करते हैं। अगर सही मानों में अगर देखा गया तो मैं कहता हूं मेरे तरफ से जो है पी नवीन जो है ये वन वो होना चाहिए था, और P2 जो है ना उस एरिया की पुलिस जो है थाने में जब गए थे स्टेशन के अंदर 2 घंटे टाइम उनको जपाने की जरूरत क्या है? एक FIR लिखने के लिए FIR लिखना उनका काम है। FIR लिखते खत्म हो जाता था। आप बोल रहे हैं 2 आवर पुलिस ने वक्त लिया है लिखने के लिए। पुलिस को कोई दबाव आया कि कहीं से आपको? नहीं, ये देखो दबाव आया नहीं आया इसे हम ना लेना देना ही नहीं है उससे। हमारे को कानून क्या है, जब कोई स्टेशन के अंदर जाता है तो उसकी अगर कंप्लेंट है तो पुलिस को जो है वहाँ जो यानी एक PCB अगर होता है, राइटर होता है, तो उसने जो है वहाँ पे कंप्लेंट लेकर उसको भेजना चाहिए था। उनको जपाने की वजह से अफरा तफरी मची है। अफरा तफरी मचने की वजह से जो है ये गलाटा हुआ है। गलाटे के टाइम पे जो है मैं देखता रहा बहुत सारे टीवियों के अंदर उस टाइम पे बैठ के, तो पुलिस जो है उसमें खामोश खड़ी हुई थी दंगाइयों को। इसमें तुम दंगाइयों को जो है ना खामोश रहने के लिए दिए क्यों उतनी देर तक? यानी तो आपका मतलब यह है कि जब लोग जमा होना शुरू कर दिए तो पुलिस अब अपना काम करके कंट्रोल करना चाहिए था। कंट्रोल करना भी चाहिए था उन्होंने। और वहां पर जो है CR थी, KSRP रिजर्व पुलिस थी, उतने बसें आप सब देखे हुए हैं कि उतने बसें जलाए हुए हैं। तो ये पुलिस जो है बंदोबस्त के लिए आती है कानून के हिसाब से। अगर कुछ टेंशन है बोले तो वो बंदोबस्त के लिए आते हैं वहां पे। तो उन्होंने आने के बाद जो है उनका जो काम होता है तो वो करना चाहिए था। आजकल तो पहले जैसा नहीं है, वायरलेस से मैसेज आना, एक मोबाइल कॉल जाने से कमिश्नर जो है उनको ऑर्डर दे सकता था, लॉ एंड ऑर्डर। तो स्टेशन के अंदर जाने कौन दिए उनको? तो सबसे पहले ये बोलो। गाड़ियां जो थी, ये गाड़ियां जो है पुलिस सीज की हुई गाड़ियां जो थे वो पूरे जला दिए गए हैं नीचे। कौन जलाने दिए इनको? बेसमेंट में डीजेएलडी के अंदर जलाने कौन दिए उनको? और DCP की कार, एडिशनल कमिश्नर की कार को मार के भी फोड़े। हाँ, वो जो तोड़े हैं ना वो एक नंबर के जो है देशद्रोही कहता हूं मैं इनको। जो गलाटे किए हैं, जो पुलिस की गाड़ी तोड़े हैं, इनको जो है सख्त से सख्त कानून के हिसाब से उनको सजा मिलना चाहिए। जी जाकिर, आप भी बहुत से वैसे वाकये देखे हैं और लिखे हैं, आपका क्या कहना है इस पूरे नजरिए पे? एंड आप क्या बोलते हैं? See, I second the thoughts of Janab bhai. First of all, it's an administrative failure. When you know that, a case like this, you have seen it across the world. जब भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान पे गुस्ताखी हुई है
It's not just in India. अगर आप Gillen's post in Denmark का भी देख लीजिए. It was the riots happened across in many parts of the world. फिर चार्ली हेब्डो फ्रांस का जो न्यूज़पेपर ने कार्टून बनाया था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगेंस्ट, वहां पे भी राइट्स हुए थे, दूसरी जगहों पे भी राइट्स हुए थे. एंड सलमान रुश्दी का जब 1980s में किस्सा हुआ था, तभी भी बहुत सारे दंगे हुए थे. तस्लीमा नसरीन के भी हुए थे. एंड वी हैव सीन इट अक्रॉस द वर्ल्ड. इट्स नॉट जस्ट इंडिया में. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पे अगर गुस्ताखी होती है तो मुस्लिम्स का रिएक्शन इज वेरी वेल नोन टू द पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड. When people came to lodge a complaint in this such a scenario, पुलिस को चाहिए था कि immediately उसके ऊपर action ले. So what he said about the delay, this is what it is, an administrative and police failure. So according to both of you, it is the administrative failure on the police not maintaining the law and order and delaying the FIR. Absolutely. Who do you think was behind this delaying the FIR? We don't know. I mean, that has to be independent inquiry has to be sit down to investigate why there was a delay. Because I mean, there are a lot of speculations that since he's a nephew of a sitting MLA, that might be the reason. But we're not sure. We cannot blame the police just like that. Even if there was any pressure, or if there was not any pressure, like Janab Bhai said, the police, the responsibility of the police is to take action. Was to stop it when they knew that people. And let me also remind you, this is something that I heard from the person himself. 2 years ago, when Sonu Nigam had tweeted against Azan, he had also said something against the Prophet ﷺ, and there was a lot of uproar against it. People, around 2,000 to 3,000 people in the same area, DJ Halli, had gathered. And yesterday when I was speaking to Maulana Maqsood Imran of Chamrat Pir Masjid, he said that when that incident happened, 2,000 to 3,000 people gathered in DJ Halli. The police inspector, ACP and DCP had called him. And he went there and he stopped any mayhem from happening. He went there and he called all the people to the masjid there, Modi Masjid, and he told people not to take law in their hands. So what, I mean, when we speak... Yeah, now you have told a very valid point, but what made this to be delayed, and why were the leaders not present there for 2-3 hours? We could see only one Maulana Muzammil that appealing to the people. Almost like 8:15. And most of the leaders and the religious leaders are very close by. Very close by. They should have either come, or probably the police should have taken responsibility to call them up, since it is a sensitive area. I mean, it is a sensitive issue. So they should have taken the responsibility of calling them and asking them to stop people, asking people to just go away. Yeah. One more general question is, people are wondering, how did so many people gather at a short time? देखिए, ऐसा होता है जब कभी भी फेसबुक, ट्विटर या व्हाट्सएप हो, इसमें अगर कभी भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अगर कोई गुस्ताखी करता है तो इतना फास्ट ये जो है ट्वीट होता है और फॉरवर्ड होते हैं मैसेजेस, इससे कोई बात नहीं है. और वहां पे जो है आम दिनों में बॉटल नेक जो है गाड़ी चलती रहती है नॉर्मल दिन में, तो उसमें कोई बात नहीं है कि आदमी वहां पे 2-3 हजार जमना, वैसे 500-600 कभी भी पुलिस स्टेशन के सामने जमा रहते हैं. कोई गलाटा होता है, ये होता है, ऐसे टाइम पे कभी भी पुलिस स्टेशन डीजे है, पुलिस स्टेशन में कभी भी गलाटा रहता है. आपका ये कहना है कि कोई व्हाट्सएप करके बुलाया नहीं और आइए इधर ये हो रहा बोल के? नहीं, कोई नहीं बुलाए हैं. Zakeer, what have you to say? I think I again second his thoughts, because अगर जो भी familiar है उस एरिया से, it's not like one of those areas जहाँ पे लोग नहीं रहते हैं. Even though it's a very thickly populated, even though there is a pandemic. 1-2 दिन पहले मैं भी था उस एरिया में, कुछ काम से गया था, and I was wondering कि लोग मास्क भी नहीं पहन रहे. And it is the scenario. I mean, बहुत सारे डेथ भी हुए हैं, लेकिन people, that's how the area is. So अगर कोई जैसे जनाब बोल रहे थे, if there is a message that gets circulated कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमने गुस्ताखी हुई है, so it's not surprising at all कि इतने लोग इकट्ठा हुए. I was there on the spot and I could see that, first there were 25-30 people, then 50, then they started swelling. Yes. And it became really difficult for the police to come in and, ambulance to come in, or even the fire brigade to come in. Do you think, a section of media says that, some political parties are involved, which we don't want to name because the matter is before the investigating authority. Yeah. SIT has been formed and the judicial inquiry also is going to take place. So my question to both of you is, do you think any political hand, you being in the politics and you have also seen politicians close and I have seen them, so do you think any political benefit these people wanted, or any political hand is there in this? It's hard to say. I mean, from what, like I said, it's hard for some of the people who are not familiar with the area to believe that ये spontaneous था.
they will always think कि इसमें conspiracy है. That's the reason so many people gathered. But somebody who's familiar with the area will tell कि it is spontaneous. It could be spontaneous. लोग आ सकते हैं. So I, as a journalist, as somebody who's been covering Muslim areas and Muslim communities for long, I think that I do not see any political hand behind this. This is as per my understanding, but. You were in politics and you know how the political parties function and क्या बोलते हैं आप इसमें? नहीं, इसमें जो है पॉलिटिकल पार्टी का हाथ है या नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं है. सबसे पहले मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जब गुस्ताखी होती है, थोड़ी देर पहले जैसा हमारे जाकिर भी बताए थे कि दुनिया में जहाँ कहीं भी हो, ये जो है गवर्नमेंट की फेलियर होती है ना, उसको छपाने के लिए. जैसा अभी कोविड के बारे में देखो, लूट मार हो रही है. जहां देखो वहां पे इन्होंने शादी महलों को अपने कब्जे में ले रहे हैं, इन्होंने हॉस्पिटल ले रहे हैं. पेशेंट को गए तो उनको बेडे नहीं मिल रहे, उनको दवाई नहीं मिल रही है. तो इन्होंने जो है ये छुपाने के लिए, और साथ में जो है गवर्नमेंट जो है आज टोटल फेलियर है, स्टेट गवर्नमेंट और जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ना. इन्होंने रेलवे जो है इन्होंने आज जो है नहीं, ये सब जो है इन्होंने उठाकर जो है प्राइवेट कर रहे हैं. इनको संभालने नहीं हो रहा है, पेट्रोल के दाम भर रहे हैं. तो इन्होंने ये मुद्दा उठाकर जो है छुपाना चाहते हैं. जो कोविड का मामला था, कोविड से जो गवर्नमेंट को जो है नाकामी हासिल हुई है, इन्होंने इसमें जो है तो नहीं हुए है, सफल नहीं हुए. उस वजह से जो है ये उठाकर जो है आज सब भूल गए, कोविड को भूल गए, सब केजेएलडी डीजेएलडी की बात कर रहे हैं. When we talk about this particular area, this area is poor. Poverty is rampant. Education level is really bad, and there's also a huge drug issue. I was going to come to this. Right? I mean, every second or third house has a drug addict there, and drug is very freely available. Drug is very freely available, and this is not just this area, but across Muslim areas, जहाँ पे poverty है. डिपार्टमेंट को नहीं मालूम रहता क्या ड्रग्स से बोल के. And we also know, I mean, there have been numerous reports have also come कि बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं ड्रग्स लेते हैं, even they took part in it. So what was the department? What was the police doing? What is the administration doing? What is the local MLA been doing for all these years to contain that? Yeah, there is a video of one person hitting with the head Innova car. Okay. Normal person can't go and hit it with the hand and brake. Yeah. He hit it with the head. So it means to say he must have been high on some drugs. Yes. और वो ड्रग्स लिया हुआ था, उसी की वजह से उसके प्रेशर से वो तोड़ता है. आम आदमी नहीं उठा सकता. लेकिन अभी इन्होंने जो गिरफ्तार कर रहे हैं उसमें एक भी जो है ड्रग्स माफिया लोगों को नहीं उठा रहे, जो ड्रग्स खाते पीते इनोसेंट्स को उठा रहे हैं इन्होंने घरों से. तो आपका मतलब ये कहना है कि जो भी अभी जो वायलेंस किया है and who have taken part in the violence are most of the people from very poor section of society who are frustrated, there were no work, jobs and war on drugs. I mean, there's a report from the police also which says, I mean, I think one of the newspaper had carried के बहुत सारे जो involved हैं, they were jobless. See, what I'm trying to tell is, there's been years of frustration. It's a culmination of years of frustration. एक तो इशू है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी, उसकी जज्बात से बहुत सारे लोग आए थे, और बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जिसके पास काम नहीं था, जो ड्रग एडिक्ट्स थे, ऐसे भी हैं. I mean, you cannot just ignore the local condition. इससे पहले पुलिस कमिश्नर भास्कर राव जो है, उन्होंने वो बताए भी थे. इसके बाद अपने अपने जो है कीमती वॉचेस मत पहनो, गले में औरतें जो है चेन मत डालो, जो है मोबाइल जो है कीमती नहीं रखना, क्योंकि लोगों के पास काम नहीं है कोविड की वजह से. ये इससे कुछ भी हो सकता है. मैं इसे आपकी बात को मैं एक और सवाल करना चाहता हूँ कि इस मद्देनजर रखते हुए इन गरीबों इन ड्रग्स के लिए कोई सियासी पार्टी इसका एडवांटेज उठाकर इन लोगों को भड़काई है क्यों? जब एक आवर जब ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, मैं भी उधर था, तो बहुत आराम से चल रहा था, 25 लोग 50 लोग. उसके बाद अचानक लड़के और लकड़ियां लेकर और खतरे लेकर भागना शुरू कर दिए. तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि कोई some backhand is there. See, Rizwan, like Janab has said, when you message something on WhatsApp today, it just spreads like wildfire. So that is what has happened within 5 minutes. Yeah. So the WhatsApp messages is one of the causes for people to come and join. Yes. Now one more very crucial question is, now everybody is blaming each. Now they're saying he belongs to this party, he belongs to this party. I don't want to take the name because I'm not a political man, I'm a journalist. So do you think this present political scenario is going to take another twist and turn, and and our some of our ulamas have gone and met this person and they're told they're going to construct a house for him and they're pacifying him,
and all those who have been arrested also, what is their fate? Nobody knows, and who are injured, nobody knows. So, what's your take on that? On This this, is again a political. I mean, as far as I know, Yeah. understand that it's a political ploy. क्योंकि उलमा सब उलमा नहीं थे, एक दो थे. So it's probably mostly जो politicians थे, they took them there. Because I don't think so. It's ulama's decision to go there. I mean, it's okay. I mean, they've said that they'll construct the house. लेकिन उससे पहले पूछने की बात ये है, as a legislator of that area, it was his responsibility to take action, which was not taken at that by time. Srinivas Murthy. by Akhanda yeah, Srinivas. under Srinivas Murthy. There was no action taken. एक leadership की जो quality है, एक distressing time ऐसा जो है, that's when it shows up. At that time, he was absent. I understand that his house was attacked, his nephew's house was attacked, but as a leader, it was his responsibility to come there and do something. जब वो 2-3 hours का जो delay थे FIR में, I'm sure he would be aware कि इतने लोग इकट्ठा He हुए हैं. got a call, and Yeah. he told according to some reports, he said to wait for 2 hours or 3 hours. Yeah, and if that is the case, then it's it has to be investigated. So we need to be asking him tough questions. घर कंस्ट्रक्ट करने का मतलब ये है कि why did the ulama go? Are they telling that the community is responsible for? अभी तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुआ है. उससे पहले ही अगर आप जाके बोलेंगे कि हम लेंगे, what does it mean? You mean that community is responsibility to burning down the house? मैं कहता हूँ उलमाए दीन जो है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो है उनके जो है आज हम कुछ दीन सीखने बोले तो उनसे सीखते हैं. तो इस वक्त में जो है उलमाए दीन जो 3 करोड़ खर्च करके उसका घर बनाने के बजाय जो है जो मजलूमों को जो है आज पुलिस उठाई हुई है उनके केस लड़ने के लिए अगर वो पैसा वहां पे लगाते तो ये बहुत अच्छा है और वो लगा सकते हैं. क्योंकि अखंडा श्रीनिवास मूर्ति जो है कोई गरीब आदमी तो है नहीं, वो पहले से ही करोड़पति है, आप लोगों को मालूम है. तो उसके लिए जो है उसका घर जला है. मुझे भी अफसोस है, ऐसा नहीं होना चाहिए था. नवीन का घर जला है, वो जो है गैर कानूनी काम है, उसे कानून के हिसाब से काम लेना था. आज जो है कानून हिंदुस्तान के अंदर है ही नहीं है. जैसा कि हाल ही में आप सबको मालूम है कि प्रशांत भूषण जो है एक हिंदुस्तान का जो है सीनियर सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट है. उन्होंने कहा था सिर्फ इतना ही कि जज जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो 50 लाख की मोटरसाइकिल में बिना मास्क पहने बिना हेलमेट पहने बैठा हुआ है नागपुर में जाके, और जो है यहाँ 6 महीने से कोर्ट जो है सारे के सारे बंद है. तो सुप्रीम कोर्ट के लायर यानी जो है इसके ऊपर प्रशांत भूषण के ऊपर जो है कंडेम ऑफ कोर्ट का केस लगाते हैं. ये कहा है फ्रीडम ऑफ स्पीच है हमारे दस्तूर के अंदर. ये इन्होंने इसी तरह जो है ना बदलाते हैं हर बात को. आज जो घरों के अंदर बच्चों को उठा रहे हैं तो कानून के अंदर है कि उसकी बीवी उसके बच्चों को दिखाना चाहिए कि हमने तेरे बाप को फलाने पुलिस स्टेशन में लेके जा रहे हैं, फलाने हॉस्पिटल में इसका जो है मेडिकल करा रहे, हम करा के जो है इस कोर्ट में हमने प्रोड्यूस कर रहे हैं. अगर तुम चाहे तो तुम्हारे लायर को लेके आकर. There's also the question of Nadeem, जो चौथा लड़का था, हाँ, जिसका इंतकाल हो गया था. कोविड I पॉजिटिव. mean, the COVID positive बोल रहे हैं, लेकिन the doctors also said कि internal injury था जब लेके आए थे उसको. लेके आए. और internal injury आया कैसा? I mean, that should be investigated कि if that was a custodial death. क्योंकि internal injury ऐसे ही नहीं हो जाता. So that has to be fully investigated. इंटरनल इंजरी विदाउट बुलेट मार्क्स. और जब पुलिस उनको yes. पकड़ के ले जाती है उस टाइम पे जो है अच्छा हट्टा कट्टा आदमी चलता है. Yeah. जब उनको कोर्ट में प्रोड्यूस करती है उसको चलने नहीं होता है. Yes. ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन है. ये उसको नहीं मारना चाहिए. जिस हालत में उस हालत में उसको कोर्ट में प्रोड्यूस करना. मैं इस बात से कहना चाह रहा हूँ कि अगर पुलिस अगर डंडे नहीं मारी तो इंटरोगेशन उसी को कहते हैं, इंटरोगेट कर रहे हैं. तो बट आप जो बोल रहे हैं कि हद से ज्यादा मार रहे हैं, देखो मारने दो. जो कर रहा है गलती उसको लेकर के मारो. जो आरोपी है उसको मारो, तुम्हें उसे फांसी दो. हमको उससे लेना देना नहीं है. कानून जो है उसे कानूनी कार्रवाई करना चाहिए. उसको सबसे पहले आप लेके जाओ, मेडिकल उसका चेकअप कराओ. मेडिकल चेकअप कराने मैजिस्ट्रेट के पास उसे पेश करो. पेश करने के बाद जो कोर्ट ऑर्डर देती है आपको उसके हिसाब से आप काम करो. उसको अगर आपको पुलिस कस्टडी देती, पुलिस कस्टडी में लो. जेसी भेजता तो जेसी भेजो. नवीन को आपने जो है पुलिस कस्टडी नहीं दी, जेसी भेज दिया, उसको कोर्ट के ऊपर है ना. तो उससे पहले आप क्यों इनको, जो मैं ही कह रहा हूं कि जो आरोपी है उसको आप जो चाहे वो करो. जो बिना मासूम है मजलूम है उनको जो है आपने जो है, मैं आज कह रहा हूं कि पूरे लायर
इसमें हिंदू मुसलमान नहीं है। जैसा प्रशांत भूषण ने एक का आवाज उठाई थी, क्या वो मुसलमान था, क्या वो क्रिश्चियन था, क्या वो, तो क्यों उसके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दिए? हिंदुस्तान कहाँ जा रहा है, कानून कहाँ जा रही है, हमारे समझ में नहीं आ रहा है। जाकिर अभी कल और परसों में ये माने कि और अरेस्ट हुए हैं और कई लीडर्स के नाम भी आए हैं। लीडर्स के नाम हम लेना मुनासिब नहीं समझे इस बारे में, क्यों इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो क्या समझते हैं कि ये एक पॉलिटिकल तमाशा चल रहा है, इलेक्शन आ रहा है, कॉर्पोरेशन इलेक्शन आने वाला है, अभी टर्म होना है, और फिर नेक्स्ट असेंबली इलेक्शन को एक दूसरे लीडर को तैयार करेंगे ताकि ये काम नहीं किया ये दूसरी पार्टी में जाएंगे। तो अभी एक म्यूजिकल चेयर चल रहा है पॉलिटिकल पार्टीज में। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक पार्टी ने कमिटी बनाई है, ये और एक पार्टी ने भी एक कमिटी बनाई है, और एक पार्टी ने कमिटी बनाई है कि इन्वेस्टिगेट करके दो। तो एसआईटी भी है, जुडिशियल ये भी है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, व्हाट्स गोइंग टू बी द सिचुएशन, व्हाट्स विल द ट्रूथ कम आउट एंड व्हाट विल बी द फेथ ऑफ दीज पीपल हु आर अरेस्टेड एंड व्हाट विल बी द आउटकम? See, I mean, the problem that I see is investigation खत्म होने से पहले भी the government itself, गवर्नमेंट के representatives are taking names of political parties. ये बोल रहे हैं कि इनको बैन कर देंगे, ये बोल रहे हैं कि इंटरनल ये पार्टी का जो कांग्रेस का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है इसके वजह से ये हो रहा है। Who are they to judge it? They need to complete the investigation. One ex-MLA, he has openly told that, tweeted also that it is this party, I was there from past 10 years. Yes. Now that the skeletons are coming out. Yes. Skeletons are coming out. So the MLA that you were referring to, he was talking about one particular party, telling that they are in hands and gloves with two other. He himself was in that party just a few months ago. So is he blaming himself for? I mean, that is a separate thing. But the administration या government का role होता है कि let the investigation go ahead without any bias, without any political influence. Yeah, yes. These people, what they're doing, they're already blaming political parties. And they're putting words in the mouth. They're putting the words in the mouth and they're feeding that into the media. And the media is going bombarding against these political parties, which is turning पूरा media trial हो रहा है, government की trial हो रहा है. They should be independent. Nowadays, everywhere it's a media trial. Exactly, which is harmful for a society to exist. We need to, the truth has to come out. You can't just go on blaming people कि इसने किया उसने किया just to make sure that you take political benefits out of it. और इसी तरह जो है जब कभी भी इलेक्शन आता है तो उस वक्त में जो है बहुत सारे अपने आप को कौम के रहबर कहलाने वाले निकल जाते हैं, निकल के जो है फलाने को वोट दो फलाने को मत दो, ये किसी का हक नहीं होता, वोट मेरा होता है, मैं जिसे चाहे उसे देता हूँ। वो कहा उसने जो है उस टाइम पे जो है वो था, लेकिन आज वही पड़ोस का एमएलए जो है, बाजू का एमएलए एक है, वो एमएलए जो है केजे जॉर्ज, वो कहाँ है, गायब हुआ है, जबकि 3 बार से चुन कर आ रहा है। अकलियत में डोमिनेट एरिया है, वो माइनॉरिटी डोमिनेट एरिया है, तो उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी उसकी बेहद लोगों को वहां से उठाया जा रहा है। तो इस वक्त में केजे जॉर्ज कहां से हो रहा है, जो उसको वोट दियो बोल के उसके पीछे घूमे, अपने आप को कौम के रहबर समझने वाले, मैं नाम लेना नहीं चाहता किसी का, लेकिन वो लोग कहाँ हैं आज? अपने घरों में चादर ओढ़ के आराम से सो रहे, घरों के अंदर घुस के जो है बच्चों को उनके सूरत देख देख के उठा रहे, औरतों के चादर खींच रहे। ये सब मुनासिब नहीं है। कानून जो है कानून के हिसाब से काम करना चाहिए। आप सीसीटीवी कैमरे ऑन करो, जिसका चेहरा है वो चेहरे को लेकर जाके आप जो सजा देना दो, उसको मारो पीटो डंडे मारो। पार्टिंग शॉट आप दोनों के लिए, ये जो वायलेंस हुआ है उसको आप कंडम करते हैं? हाँ, मैं कंडम करता हूँ इस वायलेंस के, इसकी तहे दिल से जो है इसकी मजम्मत करता हूँ। क्या करना होना चाहिए इसे जो है, जैसा सीए के एनआरसी के लिए हमने जो है एक मुस्तकिल जो है हमने मुहिम चलाई थी, उसी तरह पूरे हिंदुस्तान के अंदर चली थी। साइलेंट के साथ, खामोशी के साथ जो है धरना देना चाहिए था उसके खिलाफ। जब तक उसको अरेस्ट नहीं करते तब तक जो है हमें खामोशी के साथ बैठकर जो है काम अगर करते तो बहुत अच्छा काम होता था, कौम का भी फायदा होता था, और कल के दिन जो है ना दूसरा उसका नहीं लेना चाहता था। और साथ ही साथ में आखिर में मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान की हुकूमत चाहे कोई भी हो, चाहे वो कांग्रेस की हो, बीजेपी हो, सब एक सिक्के के 2 रुख होते हैं। ये कहना चाहिए कि कभी भी जो है किसी भी, चाहे वो क्रिश्चियन हो, मुसलमान हो, और कोई भी जात हो, हिंदू हो, पारसी हो, किसी के भी मजहब के बारे में जो है कहना बुरा है, उसको सख्त से सख्त सजा देना बोल के अगर ये कानून अगर पास कर दिए तो
तो कोई किसी मजहब के खिलाफ बोलेगा नहीं, कोई उठाएगा नहीं। उसके बाद में जो है इनकी जो है सियासी जो रोटी इन तवे सेकते हैं वो कम हो जाएंगे इनकी। Of course, I condemn the violence because the violence has resulted in the death of 4 young people. एक तो एक teenager था, and the arrest of so many people. And पिछले एक हफ्ते हो गया, अभी भी वहाँ पे कर्फ्यू है, and the livelihood. I mean, like I said, it's a poor neighborhood, poor area, and यहाँ पे I mean, most people are daily wages. और उनको एक पूरा हफ्ता अगर आप उनकी पूरी सड़कें बंद कर देंगे, so where would they go? And they have now extended it to 21st of August. So of course the violence has resulted in bad consequences. It should have been prevented, and that responsibility was the administration and the polices, and they have failed. And that's what all this has resulted in. Thank you very much for speaking, Nasheman. Conclusion, I want to say that both these gentlemen were of the view that the administration failed to take up the issue at the nick of time. They waited for 2 hours, and he said the police could have taken action and prevented this violence, and they also condemned the violence that has taken place. And they were of the view that all the political parties are trying to take benefit out of this and are blaming each other for the political gain, which should not have happened. And a law should come where no one in our country should criticize any of the gods from any religion, be it the Hindu, the Muslim, the Christian, the Sikh, the Jains, because the hour of the need is to stay with peace, love and harmony. And today there are so many other issues. Roti, kapda or makan, that's the main issue. Live in peace and harmony was their message. And I hope everything comes back to normal. As Mr. Zakeer was saying, that the curfew has been extended and the poor are finding it very difficult. I had gone there on live report. Even the milk is not available. So it's up to the government who are doing the investigation to do a free and fair and trial, see that the culprits are brought to book and the innocents are left. Rizwan, Asad, Nasheman News.